Everyone, I'm Amna, and today we will be discussing the veto powers and why should they exist or why should they not exist. I'm going to be presenting the both sides. मैं पहले फेवर का बताऊंगी कि क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए. My personal POV, I'm gonna give a disclaimer over here, is for the opposition one. I'm against the veto powers, and I'll give reasoning for that, and that will be the major part that I will convey from the veto powers segment. In favor वाले का बस एक ही point, and I'm just gonna say it out loud. If you want to research about it, if you have any counterpoint, you can let me know. But personally, I don't believe that if like what I'm going to say will have any counterpoint. But if you still do, then please let me know. I don't think so anybody watches my video, but even if they do, then let me know. So what are veto powers? For those of you who don't know, it basically gives the authority to a certain country. जो सबसे powerful countries are China, France, Russia, the United Kingdom, and the United States. That authority that whenever a resolution is going to be passed out, they have the authority कि अगर वो उससे मैच नहीं करते, उनके अपने alliances उससे मैच नहीं करते, उनके अपने point of view से मैच नहीं करते, और अगर बस उनको वो नहीं पसंद आए, if they don't want to implement that certain resolution, तो वो बस उसको रफा दफा कर सकते हैं. They can literally exile that a particular resolution. और अगर बस वो करते हैं, that does not matter the amount of words the resolution has been given. बस अगर उनमें से वो एक मना कर दे तो बस फना हो गया वो चीज़. उसके बारे में इसके फेवर में बस एक ही पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करना है. That the veto power was designed to prevent the UN from taking military action against one of the most powerful world countries. And now what does that from that could lead to a claustrophobic global war. और इसमें फिर वर्ल्ड वॉर टू का ही बताया हुआ है कि वर्ल्ड वॉर टू में ऐसा हुआ था और उसे सबक लेके उन्होंने ये वेटो पावर्स बनाई और अब नहीं होता. Now the points that are against it, I'm not going to read from the slide because I think so I already did for that one, and now we don't need to do that. So my references is Al Jazeera, and that article is published under the Israel-Palestine conflict. And the White House said that his proposal would end the war in Gaza immediately if both sides accept. ठीक है, और इसमें वो लिखते क्या हैं? Gaza will be de-radicalized terror-free zone that does not pose a threat to its neighbor. Gaza will be redeveloped for the benefit of people of Gaza who have suffered more than enough. If both sides agree, if both sides agree to this, the war will immediately end. Israeli forces will withdraw to the agreed upon line to prepare for the hostage release. During this time, all military operations, including aerial bombardment, will be suspended. और इसमें और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, but then आप इसमें खुद भी पढ़ सकते हैं अल जज़ीरा से. But अगर आप इसको carefully पढ़ें, then we have seen how the ceasefire even took place along, I think so 4 months ago. But it was again backlogged. So I think so it's just another, क्योंकि election से पहले हुआ था. We still remember that it happened before 20th of Jan. Most probably, I don't remember, I don't have the exact date, but most probably it happened on the 17th of Jan 2025, and it was backed out after Trump won the elections, and we have seen how वो दोबारा स्टार्ट हो गई थी. कोई सीज फायर नहीं हुआ था. It was it was a temporary way to get Trump to win all those elections and be the Global Peace Prize nominee by Pakistan after what it did for the Pahalgam attack. मतलब उसको उसने अपनी ट्वीट्स की और ट्वीट्स पे ही उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये हमारे नॉमिनी. उसने बहुत मेहनत की है. यू नो हाउ मच एफर्ट इट टेक्स कि आपको अपने फ़ोन से उल्टी सीधी फजूल बकवास करनी होती है. इट टेक्स अ लॉट. सो वी अप्रिशिएट हिम फॉर दैट. और उसके अलावा कंटिन्यूइंग विद दैट आई वुड हैव ऑल्सो लाइक इसमें जितने भी सीज फायर में कंट्रीज आई थी ना, सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान. लेकिन इसमें और भी बहुत मज़े की चीज़ है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, वट एवर हिज नेम इज़, आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट, उसने कहा है कि ये डॉक्यूमेंट हमारा है ही नहीं. उसने इनकार कर दिया दैट दिस वाज अपडेटेड टुडे ओनली 9 o'clock, एंड ही सेज दैट द फॉरेन मिनिस्टर इश्तियाक समथिंग लाइक दैट. इश्तियाक नहीं है, बट आई एम बैड एट pronouncing names, so I'm just not gonna do it. Just check for yourself. और इसमें उन्होंने कहा था कि ये हमारी तरफ से नहीं है, ये यूएस की तरफ से है. और वो कहता है कि they're distancing the government from the plan. This is not our document which we sent to them. There are certain key areas that we want covered. If they are not covered, they will be covered. He said, adding to the immediate objectives of the plans were ensure a ceasefire, stop the blood, stop the humanitarian aid flow, and end forced displacement. Now we will see how Trump is going to misuse it again, and then we will have another. Because I don't see it coming. I just don't see a ceasefire coming. Even
अगर आप इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वैसे भी इसके बारे में सोचते हैं सीज फायर क्या होगा और गाजा वालों के लिए क्या कर लेंगे। बिकॉज कि जब हिरोशिमा और नागासाकी में जो अटैक्स हुए थे, लोग अभी भी उससे रिकवर नहीं कर सकते। आप वहाँ पर देखें उसकी, अगर आपने उसके बारे में पढ़ा हुआ है कि वो अच्छा, लेकिन वो तो न्यूक्लियर के थे अगर आप कहो तो। अभी यहाँ पे क्या कहते हैं, फ़लस्तीन में भी 5th लेवल की, आई थिंक सो हंगर स्ट्राइक है, हंगर स्ट्राइक नहीं, लेकिन वहाँ पर इस लेवल की हंगर है, आई थिंक सो लेवल 5 जिसको कहते हैं, उससे आप रिकवर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रिकवर फ्रॉम देयर। और अगर आपको अभी याद आया, लाइक पहले तो आपको अपने इलेक्शंस के टाइम पे याद आया था कि अब सीज़ फायर कराना चाहिए, जो बाद में हो भी गया था आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीच के बाद ख़त्म। लेकिन उसके अलावा भी आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द यूएस राइट नाउ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमने उसके अलावा बहुत सारे, सूडान में भी जो हो रहा है, सीरिया में भी जो हो रहा है, आई एम गोना रीड दीज 2 पैराग्राफ्स एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग दैम। Critics condemned the veto as the most अच्छा, पहले तो डेमोक्रेसी की बात की थी कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए, बट एट द सेम टाइम the point which is raised, because why to the reason why the veto power should not exist is also that it does not have any democracy involved in it, कि ये डिसअप्रोप्रिएशन पावर देता है टू 5 कंट्रीज। अब देखें वही चीज़ आ जाती है ना कि अगर बहुत सारी कंट्रीज वो मान गई ये चीज़ पास होनी है, लेकिन सिर्फ अगर इनमें से कोई नहीं माना तो फिर वो चीज़ पास नहीं होगी। और इसकी एग्जांपल देती हूँ कि जो सिक्योरिटी काउंसिल स्ट्रक्चर में जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी ऑफ 1945, not the world today, where rising powers like India, Brazil and excluded from having a similar say. यहाँ पे जो आप कंट्रीज़ देख रहे हैं, ये भी जो कंट्रीज़ हैं, these are also objectively should be included there, but they are not, even though they are major representative for their region. ठीक है, the veto is often used to protect a permanent member's own interest। वही चीज़ ना कि उसने, ट्रम्प ने अपने लिए, जब उसके इलेक्शन हो रहे थे, अब क्या अभी भी कुछ अपने लिए करना होगा, दोबारा से वहाँ पर बम्बार्डमेंट होना शुरू हो जाएगी। अभी यहाँ पर इन्होंने जनासा, नहीं ये नहीं कहना चाहिए मुझे, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कहने से, लेकिन फिर भी नहीं कहना चाहिए। Yeah, because I'm such a boring person. I think I'm such a nerd. I can talk about nerdy stuff all along, but when it comes to I have make a joke, I'm so bad at making jokes. This often leads to inaction of the. इसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा बात की हुई है, वॉर्स के बारे में, मास अट्रॉसिटीज़ के बारे में वगैरह वगैरह। These are my signs. I just wanted to talk about that you should go and you should read the 20 points, and then you should also, I would refer to you the video that Faisal Baraj, his name is, और वो देखो, उसी को जानो कि वहाँ पे पेज पे होता है, आप वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं। मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन आई वुड रेफर टू हिम एज अ रिलायबल सोर्स। और उसके अलावा दैट्स ऑल एक्चुअली।